debate. I'm going into a breaking news section. As we break the nation's sharpest opinion, and my friend and colleague Abhishek Kapoor is with me here in the studio. And Abhishek, as you know, we just got the news. I've seen about 4 pages of the Archaeological Survey of India report, which has been handed over to litigants in the Gyanvapi case, and we've accessed it through what Vishnu Shankar Jain has given to us. And I'm sure the same would be given to the Muslim side as well. But It has a rather sensational claim and quite direct. I mean, there are no two views about it. Yeah. And what is being said here, and you can go into the details of what is being said, it appears that the Archaeological Survey of India has said that where there exists a mosque, there was a temple. A big temple. A large temple. Yes. And it has given details that can have a huge impact on what the court decides in the Gyanvapi case, which means the Hindu side has some really solid claims on the Gyanvapi temple and the Hindu place of worship. You want to share those details? It is actually a Hindu place of worship. Before I get into the real opinion, but Arnab, the facts, as given in the ASI report, which Vishnu Shankar Jain has shared, during the survey, stone inscriptions were found, and 27 places, including inside the room where the namaz or the prayers of the mosque are carried out. And inside the inscription inside was scratched out, but other 27 places, inscriptions in Sanskrit were there. A series of cellars were there, and the western wall was part of a Hindu structure which can be identified clearly. This is what ASI is saying. A pre-existing structure was destroyed during Aurangzeb's regime. That's what ASI is saying. They also mentioned that a huge temple existed before the mosque came up. So obviously these are the findings of ASI which have been shared. This is a public document, or no? So nothing secret about it. There is nothing secret. It's a public document. It's a public document. It has been put out and shared by the court with the litigants. So the court also knows this goes into public domain. So this is the only scientific evidence anyone can have. This is scientific. It cannot get more scientific than that. So what is it saying? It's basically saying that the Hindu side is correct. And it's like stating the obvious, because if you look at Gyanvapi, you have been there or no? If you look at the structure, I mean, who says it's a mosque? Except for the domes there. And that really shows the brazenness of the people who did it. Because they thought at some stage India would convert 100%, and so they can live with it. It's a conquest mosque. Remember, there was no paucity of land at that time. These were rulers, they had no paucity of money. They were building Taj Mahal, they were building the Red Fort. So obviously, this was done to send across a message that you are a conquered nation, a conquered civilization. Please take this as conquerors giving you something. So the attempt was to break the temple to prove the superiority of the Muslim rulers. Yes, of that time. And to put the Hindus down. Yes. But the most incredible thing is, like all the places of worship associated with the Hindu religion, the Hindus never gave up. They kept coming back. Yes. Like with all the temples in their structure, in their grandness, may not be as grand as they originally were. Yes. But the temples remained. The place of worship remained. Hindus continued to congregate there. The Shringar Gauri Puja was always held there till recently, till it was stopped. Now you have the Archaeological Survey of India is coming and saying the Hindu side is correct. It's scientific. It's scientific. I mean, so this is then, I mean, the place will have to be given to the Hindus. These people for would worship. say, where is the proof? Now here is proof, and most scientific. So obviously they have to now accept it and give it back. We are in a situation right now, being told on the nation's sharpest opinion. We need to go into the debate on this. And Abhishek, we have Vishnu Shankar Jain with us. And Vishnu Shankar Jain is a senior lawyer representing the Hindu side in the Gyanvapi case. Why don't, is he on with us? Can you have him on air? Vishnu Shankar Jain ji. Okay. Namaskar, congratulations, Arnab Goswami here. And with me is Abhishek Kapoor, our senior executive editor. Namaskar. It seems that this is a big victory for you. And the thing is, yesterday I was requesting you that when you get the copy of the report, you first give it to Republic. And therefore you are here. Yours is a Republic exclusive. Vishnu Shankar Jain is live with Republic to tell us details of what is in this ASI report. Abhishek, maybe you want to ask the first question. Yeah, so Vishnu Shankar Jain, you can actually share the crux of the report, because it's a bulky, I'm told, voluminous 1500-page report. One, the crux of the report, and two, is it by the ASI? Is it scientific? Is it also the one shared with the other side, the Muslim side as well?
No, this is a common report which is given to everyone, which is given to the state government and which is also provided to the Anjuman Intizamiya, says by the others. It is very clear that this copy of the report is with the others also. Now, some very important findings of the report are, and which is very, very crucial, that there existed a pre-existing structure. And the pre-existing structure, when that conclusion comes, the ASI has very categorically said, and I'm quoting it, it says, it can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure. So this is a very, very crucial finding of the ASI in my legal opinion. And apart from that, the most crucial finding which the ASI gives is about the inscriptions. Inscriptions also they find, and I'm just quoting it, that Mahamukti Mandap is mentioned in these three inscriptions is of great significance. And apart from that, this inscription which has been found by the ASI is into various languages, and the name of the languages are Devanagari, Grantha, Telugu and Kannada scripts. And these inscriptions were reused and then it was installed in the so-called mosque. Apart from that, the very, very important conclusion of ASI is that the sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the dumped soil in the cellar. So as I told you that last time also, that ASI during the survey has found a lot of artifacts and sculptures which pertain to Hindu deities that were also found in the cellars of the so-called mosque. And apart from that, there is one complete paragraph of the ASI about the nature and age of the construction. And when the ASI discusses the nature and age of the construction, the ASI concludes and says, and I'm quoting it, the Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in 20th of Aurangzeb, that is 1676-77. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in the 17th century. This is very, very crucial finding, extremely crucial finding. The ASI says that there was a pre-existing structure which was destroyed in the 17th century during the reign of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure. So our claim was continuously that this is a mosque, this is not a mosque, this is a ruins of a Hindu temple, and perhaps that's what the ASI has concluded, that this structure which is existing was built after destroying a Hindu temple in 17th century. And these are not my words, I'm quoting verbatim the conclusion of the ASI. And last is the conclusion of ASI, which is very, very crucial and significant for this case, is this: based on scientific studies, survey carried out, study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure. So, Arnab, precisely in Gyanvapi, our case was that this so-called mosque is not a mosque, and the pillars and the remains of Hindu temples were used in constructing the so-called mosque, and a pre-existing Hindu temple was destroyed. And if you will ask any Islamic scholar that does Islam permit demolishing someone else's place of worship and building a mosque over there, the answer can be by any Islamic scholar, only one, that it is not permissible in Islam. So these things are not permissible in Islam. These things are not permissible under Hindu Shastrik Niyam. What is your demand now? The question I have for you, Abhishek and I are asking you tonight. Yeah. What do you want to coexist with a mosque? What are you now going to ask the court? Since the Archaeological Survey of India report is proven you. Sir, with due respect, my demand is very, very clear. There is no question of coexistence. There is no question of giving them an alternate land. They have demolished my temple and they have constructed a mosque there. So we need this premises back, and the settlement plot number of this premises, revenue plot number 9130. We need this entire area
and then we will make a temple there. Our deity, our shivling is existing in the Vazu tank. So we need this entire area. So our demand is very, very clear that we need the possession of this entire area, and this so-called mosque is not a mosque in the eyes of law. Vishnu, that's your prayer, but we know and you know the legal processes. So obviously it can be challenged. There is a legal process goes right up to the Supreme Court. Now, what according to you are the possible arguments which the opposite side, the Muslim side, could use or pick up from this report to challenge it and take it to the higher court? See, I don't know what the Muslim side will do. I'm not the counsel for the Muslim side. They will be in a better position to explain you that what their report in the higher court is very, very tough, because the opinion of the ASI is based on a detailed scientific study, and the scientific study is in front of you, is in front of everyone. And this scientific study is based after a detailed survey of 92 days. In this detailed survey of 92 days, Can you share a lot couple of Hindu scientific artifacts, elements Hindu from the report? deities were found in the. I beg your pardon, sir. Can you share some of the science? I beg your pardon. What science the ASI has used in this report to back its claim? Like, are they saying that this is carbon dating? Are they saying that this is the language of the inscription? Are they saying or suggesting that this language corresponds to that period, etc.? ASI itself is a science. This entire ASI comes within the definition of a scientific body. So whatever ASI is saying is based on their intrigue, detailed study. And if you will see and read the report of the ASI has always gone on to say and read the inscription which was there by the Aurangzeb, in which he himself has mentioned that there was a temple which was existing and that was demolished. So all these things are the basis of the report of the ASI. Now this is I have the copies here of the report. I want to tell you what has been said here. Abhi to Asif Sohail, advocate Tausif Khan, Munna Khan, Rashmi Samant and Vinit Goenka are debating on other sides tonight. You see, Asif, now the demand of the Hindu side has been proven to be correct in the ASI report, and the Archaeological Survey of India has said that it can be said that there has existed a very, very, very large Hindu temple prior to the construction of the existing structure, which means that the Hindu temple was broken, demolished, right? And on top of that, most unfortunately, by breaking the temple, a mosque was built. Now, Asif Sohail, the court will go with this. Tausif Khan, scientific evidence, this has been found out that the Hindu side was right. Arnab, You cannot deny the Hindus the right. No, Arnab. The Hindus have the right legally and technically. Yes. No, you see, Arnab, when in any case it is not permissible for court by judicial intervention to invent facts. So this whole exercise being taken out by the court is illegal, per se illegal, and cannot stand the test of legality. Oh, the court of India, the court is illegal. Yet this court is illegal, going on. Only All India Muslim Personal Law Board is legal. Exercise is Supreme Court of India is illegal. They are creating facts. High courts are illegal. Intervention, you cannot create facts on the ground. That is the Archaeological Survey of India does not create facts. Do not speak like a primary student and say that court is illegal. Court's action is illegal, and it will not stand the test of judicial review in higher court. Secondly, why this exercise is being done? Because I'm not speaking like a primary student. You're speaking like someone who's never been to school. Benefit, which could be a possibility, but I'm not responsible to put you through elementary education. If you have not been to school, if you're not educated, that's your problem. But I'm here to educate you that if you were to say that the courts are doing something illegal, I hold a degree of law which has been approved in by the court and not from a carried university out. in UK, and you know that very well. Not done by Abhishek Banerjee. It's a survey done by the Archaeological Survey of India, not the Archaeological Survey of Pakistan or Madagascar.
This is No, your you don't channel. trust the Archaeological Survey of India. You trust the Archaeological Survey of Pakistan. You want to the viewers. You don't But trust the fact Archaeological is Survey of India? And the fact is, No, why that don't the you law trust the does Archaeological not Survey of allow India? the Because it doesn't suit you. By judicial intervention to create facts in any case. That is not permissible. It is not permissible to create facts in any case. And I am repeatedly Silly saying argument. that, which is happening in the Gyanvapi case. Therefore, why this is happening? Because BJP stands to benefit from any polarization. You see, the chapter of Ram Mandir is over. Babri is demolished. Ram Mandir is already built and already it is inaugurated. So now they move on to Kashi and Mathura so that they can, in the name of these Mandir, BJP can help and get votes. So that's fine. Okay, India is a majoritarian country and we are living in a undeclared emergency, and we can There's expect nothing that. majoritarian about it. Demolish the Aurangzeb was mosque and majoritarian or what? Or minoritarian? we will live with it. Okay, I'll get Vineet We to will live respond. with The it. debate is on because certain findings have come We out in the will public live with domain. it. Go ahead, demolish Vineet, the mosque what and should be done now? build a temple. We will live with it. Ram Ram to Don't you tell and Ram lies. Ram to all my co-panelists. Don't defame the judicial And all the process. viewers who are watching me Don't right now. misuse the It judicial has been very process unfortunate because that we were it does colonized, not, tyrannized, the and with the legislature might for of the the sword, work of legislation, the judiciary temple should not was become a converted tool. into a mosque. But the colonization did not continue. Only the time Aurangzeb was there. It continued even after that in the British era and also after the independence. So we right now see those cowards who got converted because of the fear of the sword, trying to tell us that the law is illegal or law is incorrect. But let me remind them, the findings of ASIs are very clear. Trishul, the ling, the swastika, the pericota, the veranda, all the proofs which are there tells me loud and clear that it was a temple, a grand temple of Hindu worship gods. So I would request them that at least now they should come out and hand it over nicely. In case they don't want to do that, we will all wait for the court to give it. And like Ayodhya, I'm sure this will come to the Hindu side and a big temple will be created on this disputed site. I don't know what we are arguing about here. Actually, Munna Khan of the Congress Party, Munna Khan ji, आसिफ सोहेल भी है, आप भी हैं प्रोग्राम पे. अब इस पे मतलब इसमें डिबेट करके क्या फायदा मुन्ना खान जी? अगर ये मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनी है और अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रामाणिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो बीजेपी नहीं बोल रही ना उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो साइंटिफिक अभी अगर वो कहती कि नहीं मंदिर को तोड़ के नहीं बनी है, हम उसको मान लेते. अब जब ये बात कंफर्म हो गया है कि ये मंदिर थी, है ना, तो थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना मुस्लिम साइड की. ये अप्रोच जो है मुन्ना खान जी की, ठीक है मंदिर थी, तोड़ दिया, हुआ तो हुआ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. इस पर कुछ तो मतलब मुझे लगता है मीडिएशन होनी चाहिए. जी मुन्ना खान जी पहले जवाब दे, फिर आसिफ जी जवाब दे, क्योंकि इस मुद्दे की कोई तो समाधान मिलना पड़ेगा ना, कोई तो यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. नहीं मस्जिद तोड़ने की बात ही नहीं है, ये तो कोर्ट में प्रक्रिया है. नहीं सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए. देखिए जब कोर्ट में केस चल रहा है, एक तो इलीगल है ये रिपोर्ट को बाहर लेकर आना, दूसरी चीज ये कंट्री में अनरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है. बाबरी की तरह, कायरों की तरह, जो बुज़दिलों की तरह जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वैसे ही चाह रहे हैं कि ज्ञानवापसी की मस्जिद भी तोड़ा जाए. ये गलत है. देखिए जो भी ये कोर्ट के अंदर होगा, अभी क्यों जजमेंट हो जा रहा है के जोर पर किसी को मुसलमान बनाना, ये कहां से लॉयर ने टाला है, उन्हें तो आप देखें तो आपके पूर्वज कौन थे साहब? खत्म हो गया. शूरवीर तो है क्या? गलत हो गई ना सर. जमहूरियत मर गई है क्या? कोर्ट क्या खत्म हो गया है क्या हमारे पास? ASI की रिपोर्ट को बार बार चैलेंज किया गया है. कई केसेस के अंदर
ये देखिए कोर्ट ने तो जो किया है, ये देखिए ASI हमारे लागू। इस्लाम में कहीं पर भी नहीं है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, पर हिंदुस्तान के अंदर तो एक प्रूफ कर दिया गया है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा सकता है। हम तो खिलाफ है, मस्जिद को अगर तोड़ हुआ कर है नहीं, तो रिक्लेम बराबर इसके करके बारे में पूरा जो आपने जांच जोर होने दे और जबरदस्ती खबर तलवार के जोर पे अपना तोड़ा है। जजमेंट क्यों लेकर जब आ रहे हैं? मुझे मुझे अभी क्यों एक मिनट, अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं आप? ये पूछिए मुन्ना खान जी। मुन्ना खान जी को सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक कपूर। अभिषेक कपूर सवाल पूछ रहे हैं मुन्ना खान जी को। मुन्ना खान जी मुन्ना खान जी, क्योंकि आपने कहा कि मस्जिद, मंदिर की जगह मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, मैं आपकी बात से सहमत हूं और शायद सभी आपके जो वाइज मैन हैं आपके धर्म के वो सहमत होंगे। पर 134 नंबर के पेज पे जो बात लिखी है, जो 34 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उसमें से कुछ इंस्क्रिप्शन देवनागरी में है, कुछ तेलुगु में है, कुछ कन्नड़ में है, कुछ ग्रंथ में है, और उसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन है आप जिसको मस्जिद कह रहे हैं उसके अंदर, उसमें भगवान जनार्दन का नाम है, भगवान रुद्र का नाम है जो शिव का नाम है, और भगवान और उमेश्वर का नाम है जो भगवान शिव का नाम है। तो क्या आप अपनी उपासना भगवान शिव को करेंगे, करते रहेंगे, करना चाहेंगे? इस्लाम में ज्ञान कहाँ से आ गया? पहली बात तो मैंने कोई अभी तक ना कोई जवाब दिया है, ना मुझसे कोई सवाल पूछा है। सवाल ये अगर आपका मुझसे है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम धर्म रीति रिवाज के हिसाब से अगर कोई मंदिर को तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो मैं समझता हूँ वह नमाज कभी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, जो अंडर ट्रायल कोर्ट में अभी मसला चल रहा है, तो ये कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला जो होगा मान्य होगा, क्योंकि इससे पहले जो अयोध्या में फैसला आया किसी ने एक शब्द एक लफ्ज नहीं कहा। 370 हटा कोर्ट का माननीय न्यायालय का फैसला था, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। तो ये अगर कोर्ट के अंदर ये मामला है तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। तो मैं ऊपर कहने के ऊपर नहीं जा रहा, जब तक कोर्ट का न्यायालय का फैसला नहीं आता मैं समझता हूँ दोनों समुदाय को शांति से उनका लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा तो 1676 में भी हुआ था ना, औरंगजेब के टाइम पे। हाँ, ये औरंगजेब की शायरी है। औरंगजेब के टाइम पे भी यही हुआ था, तब हुआ था लश्कर भी तुम्हारा तलवार भी तुम्हारा। अब तो कोर्ट है। और कायर जो थे वो कन्वर्ट हुए थे। नहीं, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा तो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था ना जी। अब तो कोर्ट है, ASI है, मीडिया है, और मोदी के मैं यही सुन रहे हैं, आप बैठे डिबेट कर रहे हैं। समझना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, दोनों सालों में बहुत बड़ा फर्क है। औरंगजेब और आने जैसे बीच के अंदर। अच्छा अभी बताइए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुन्ना जी देखिए, मैं कोई बार-बार उसी समुदाय के ऊपर कहना कि नहीं आपकी क्या आपत्ति है, तो मैं समझता हूँ आपत्ति किसी ने नहीं जताई। अर्नब, I will let come in here. मुन्ना खान जी एक बात तो मैं आपको सराहना देना चाहता हूं कि आपने जो बात कही कि कोई भी मुस्लिम समुदाय के कोई भी वरिष्ठ नेता, मैं ओवैसी को नेता नहीं मानता, उन्होंने नहीं कहा कि ये अयोध्या की जो वर्डिक्ट है इसको एक्सेप्ट नहीं करे, है ना। ये तो बड़ी बात आपने कही एंड इट्स अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम यू। अभी मेरा ये एक अलग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है अभिषेक, एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू इज हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म इन दिस कंट्री। What do Hindus want? Some Hindus say that over the mosque there should be a temple. Return the land and we will build a temple. We will rebuild the temple. There is also another view, Abhishek, ki let a mandir and masjid coexist. वहीं पे श्रृंगार गौरी का वहां पे जो पूजा आरती सब होती है वो जो रोकी गई है और उसको रुकवाया गया है 92 में, उसको अभी 31 साल हो गए, उसको फिर से शुरू करवाइए। पूजा आरती होनी चाहिए। अगर मुसलमान वहां पे अपना वहां पे नमाज पढ़ना चाहे पढ़े, और हिंदुओं को भी पूजा करनी चाहिए। इन अ वे दिस विल बिकम अ टेम्पल टू रियल सेक्युलरिज्म इन दिस कंट्री। हाँ, इसमें टची पॉइंट ये है कि जहां पे शिवलिंग है वहां पे अगर वजूखाना है तो इसमें से ठेस पहुंचती, इट हर्ट्स हिंदूज, कि जहां पे हमारी शिवलिंग है आप पहले तो उसको कहते हैं फुआरा है, वहीं पे वजूखाना बनाया, ये तो उससे
This is a deliberate attempt to insult Hindus. Yeah. This should not be done. And So my point is, can there be a compromise? Rashmi wants to come in. Arnab, tolerance is a two-way street. It just can't be the onus upon one community to, somehow carry the entire burden of tolerance. Whilst they've clearly demonstrated that they're okay, indulging in abolition, where there is shivling, that clearly shows that tolerance is not a two-way street. They want to insult us, and they've been insulting us ever since the time that they took down the Mandir, the Bhavya Mandir, which has come up in the ASI report. Whilst you look around the world, Islamic conquests have a history of plundering places of worship of their subjects and building their places of worship. You can look to Hagia Sophia itself in Istanbul. It used to be a church, they plundered it and they made a mosque out of it. So the history is global. So I mean it, and the kind of denial that we're seeing on the debate today, it is just an indication of the intention with which the act was carried out and the intention of the other community. So when the intention is not pure, you cannot expect coexistence. You cannot expect tolerance when there is no equality in intention on both sides of the street. So tolerance can only work when both communities have equal respect for one another. But suppose it were to be. No, suppose it were. You see, the thing is that Aurangzeb went on military campaigns to destroy temples. Hindus were made to pay jizya tax, right? He brutally persecuted Hindus. He slaughtered non-Muslims. He got his soldiers to rape Hindu women. Krishna. He did a lot of things to Hindus. We Under know. the staircase of the Janhara mosque. We know. Aurangzeb ne jo keep prodding on it and insulting the community. He did it. But now the fear is, okay, let me present the other side. The fear is this, that Aurangzeb, Babur, all these people, and even Akbar, who's made out to be some kind of a non-violent person who he was not. Secular. A secular person who he was not. The Mughals were not secular at all. None of the Mughals were secular. They were all communal. The fact of the matter, and very vicious. The fact of the matter is, the worry is, Abhishek, that if you open the pages of history, there'll be hundreds and thousands of temples which have been destroyed. Yeah. In Delhi, Quwwat al-Islam Mosque. Huh? All across Delhi, temples were broken. Mosques were built on top of them. So the Muslims are saying, "Ab band kahan hogi?" जो जुल्म औरंगजेब ने हिंदुओं पर की, वो deny नहीं कर रहे. But they are saying now what to do now. Why should we pay the price? How do you handle that situation? How many temples demolished by Arnab, I think a formula has been talked about in terms of letting these three holiest of the holy places have been demolished to build the separate roofs land was in allocated for a Ayodhya. mosque to be built. It is not that, the Ram Mandir was made and then there was justice only to one Will you community. talk So about we the should temples be that Modi has compensated. No, The fact that Tausif, it is not Tausif, yeah, Tausif. Why the local Tausif is sadhus responding, in Ayodhya are Rashmi. upset? Thousands of local sadhus in Ayodhya are upset because hundreds of temples. That you don't Which worry. sadhu is upset? Give me the name of one local sadhu who is upset. आप नाम बताइए. Which local sadhu is upset? No, which local sadhu is upset? नाम बताइए. Which word? झूठ मत फैलाइए. नाम बताइए. Tell me the name of the local sadhu who is You're a upset. reporter. You can find I live in this world. the road which is being built from airport to the Ram Mandir. In that road, in the road expansion plan, hundreds of temples and mosques have been demolished and roads are being built over it. The locals are angry about it. Why don't you interview पता नहीं what you are them? talking. Why don't you hold Modi government responsible I in am order asking to you, promote Munna ji, let me go to Munna. That's not a serious argument. Let me go to Munna and Asif. Munna and Asif, there is if one were to say there's a time to compromise now, this is the time to compromise. Suppose instead of taking this matter in court where you will lose, most probably you will lose the case in court because the scientific evidence is not with you. Isn't it more reasonable to have a midway solution and let Hindus worship there? Return that place of worship, a significant part of it to Hindus. You do your namaz. Give the important areas to the Hindus. Coexist. Maybe that's a better way out. Yeah. Otherwise, this is going to be a real big fight and a very bitter fight. Asif, why not do that? We still have a chance. देखिए मैंने आपको
अर्नब, मैंने क्लियरली आपको बताया है कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है कोई चीज मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए, और कभी हुआ नहीं है। देखिए, अरे दुनिया पिछले भर में किया है ना, 200-300 साल में क्या इजाजत हुआ नहीं हमें दिया पता फिर भी नहीं। किया ना आज आप लोगों एक ने। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये अलाउड नहीं है। भगवान स्क्रिप्ट को जो हो सो हिंदुस्तान में अनरस करने की कोशिश की जा रही है। बाबरी खत्म हो गई है, मुद्दा नहीं है। दुनिया भर में ज्ञानवापी ऐसे हो गई, किया दिल्ली गया है, मस्जिद हो गई, सिर्फ हिंदुस्तान काशी की बात कॉरिडोर। नहीं है। देखिए, काशी कॉरिडोर में कितने इसको पढ़ा शिवलिंग को करिए। तोड़ा गया और रिकॉर्ड है। जब क्यों नहीं हिंदुस्तान के लिए जो बैठे हैं आपका ना गवर्नमेंट एम्बेसडर्स, टर्की में नहीं नागपुर है, पर यूनिवर्सिटी वहां से पर पढ़ भी के आते हैं। एक जब चर्च कुछ को नहीं आते तोड़कर बोलने मस्जिद को, बनाया गया। आज एक क्या है, अपने आप को एक, देखिए, एक अपने आप को अपनी ब्रांडिंग करने के लिए बैठकर आके एक कम्युनिटी को देखा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हिंदुस्तान जो तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी का है। सब मिलके लोगों को नौकरी, तालीम, भूख के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं। वो मंदिर उसने तोड़ी है, वो मस्जिद उसने तोड़ी है, वो मंदिर उसने बनाई है। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी, आज क्या करेंगे वो बताइए आप। आरएसएस क्या कर रही है उसके बारे में 10 क्यों करोड़ महिलाओं को गैस वो सिलेंडर कर रहे हैं दिया, मुझे पूछा बताइए। नहीं कि तेरा क्या नाम मुल्क के सलमा है कि मस्जिद मंदिर कोई सरिता बच है। गया क्या? जब टॉयलेट दिया ना 10 करोड़ लोगों को, तो पूछा नहीं कि तेरा नाम क्या है, फातिमा है कि फरजाना है। उनको भी टॉयलेट दिया। जब 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, तो पूछा नहीं कि तेरा नाम असलम है कि आतिफ है। सबको दिया। ये मोदी जी कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, किसी के औरंगजेब ने बाप जो की मंदिर मिल्कियत तोड़ा ने था, नहीं कहा ये आपकी मुल्क जानकारी हमारा नहीं है, रहेगा और हमेशा रहेगा। बात ये बता मुल्क दो, के हम बराबर किलोमीटर हिस्सेदार है। आप किलोमीटर जैसे रोड आके लोग बनाया हमें गया, बोल नहीं ब्रिजें सकते। बनाई गई, उसके हमने बाद दिया, जाके उसने मंदिर दिया। बनाया, और वो मंदिर बनाया भारत, हिंदुओं ये के पैसे से, हिंदुस्तान, ये गवर्नमेंट के इंडिया पैसे से हमारा नहीं। था, हमारा आप ये खून ना बहा है इस जमीन के अपना अंदर। ये जो मॉरल हाई आजादी में ग्राउंड है कहाँ बैठे कहीं और थे ले चलिए। आपके? तो गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बनाया अंग्रेजों गया के है पास ये जाकर मंदिर। पैर पड़ लिए ना, आप ये एक बात समझिए, वो भूल गए ये आप। हिंदुओं को जब उसकी के बात करो पैसों ना से आप। बना है ये आज क्यों कर मंदिर। रहे? जब आप जो ये दो बोल रहे हो कम्युनिटियों ना ने, कि चारों ने मिलकर भूखमरी आजाद कहाँ कराया खत्म है। हो गई? अरे गवर्नमेंट के कार पैसे को से बना ये दिया, तो हो रहा कन्वर्ट है, कर दिया। राशन बांट कोई रहे का हैं, समझदार। घोड़े I बनाए would जा like रही to है। salute those गवर्नमेंट के people पैसों who से were ये नहीं not बनाया है terrorists, अयोध्या who में were राम not मंदिर। cowards और like those गवर्नमेंट people के who were पैसों से converted, कोई sir. मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। And to हिंदू अभी retain भी their जिंदा है religion. और हिंदुओं के पैसे से बनेंगे ये। और हिंदू अगर बनाना चाहते तो बना ले, उनका भी देश है ये भूल चुके हैं लोग कि ये हिंदुओं का भी देश है। ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में ना सबका देश है सिवाय हिंदुओं का। वो रहा आपका तात्पर्य। अब जो आप कह रहे हैं ना, इसका तात्पर्य तो यही है मुन्ना आप मुन्ना खान जी, सबका आप देश कुछ कहना है, चाह रहे हिंदुओं का हैं? नहीं। मुन्ना खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रश्मि होल्ड ऑन, गवर्नमेंट के पैसों से टैक्स के रश्मि होल्ड ऑन। आसिफ मुन्ना खान आपके साथ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुन्ना खान जी बोलिए। मुन्ना खान जी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुन्ना खान जी एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आसिफ सोहेल एक रेडिकल पोजीशन ले रहे हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा मॉडरेट लाइन ले रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मुन्ना खान जी कि कितने एएसआई रिपोर्ट को रिजेक्ट की जाएगी? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या के केस में भी एएसआई की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा था उस एएसआई रिपोर्ट ने कि टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड बिफोर बाबरी मस्जिद वाज बिल्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा कि बाबरी मस्जिद जहां पे खड़ी थी, है ना, टिल 1992 ये वेकेंट लैंड पे नहीं बनी है, और वहां पे प्रमाण है कि उसके नीचे एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर वहां पे थी, है ना। वो अयोध्या केस में ऐसी फाइंडिंग थी। ये तो उससे भी ज्यादा क्लियर फाइंडिंग है। तो इतिहास से सीखना चाहिए ना हमें कि हम कितने ऐसे रिपोर्ट को खारिज करेंगे या डिनाई करेंगे। नहीं, ये बात, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई गई। अभी 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। 900 मस्जिदों की लिस्ट उनके पास, मैं ऑन रिकॉर्ड आप ही बता दीजिए कौन सी। दूसरी बात, अभी बताइए कौन सी हमारे सुन लो, मजार और ना ब्रिज। अरे ओवर ब्रिज के ऊपर मजार कहाँ से आता है यार? कहाँ से आपके वहां पे बन जाता है, आपका राइट बन जाता है? कहाँ पे वो आ गए? रेलवे स्टेशन। उनको ऑन एयर लाइए ना, उनका लिंक करके। आई लॉस्ट द लिंक। या वापस आइए, ब्रिंग हिम बैक, स्ट्रेट इन द पिक्चर। वन से कुछ कह रहे हैं या बोलिए मुन्ना जी, बोलिए। लेट मुन्ना खान कंप्लीट प्लीज। हाँ बोलिए सर 900 मस्जिदों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसी तरीके से जो बार बार हमारे अभी मित्र कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया, तो मैं समझता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, ये मंदिर में, शमशान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में छिपने की जरूरत नहीं है। विकास तो बोलता है जनाब, आप विकास तो करिए। विकास फिर आपको सम्मान भी तो लेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आज नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज नुकसान भारतीय जनता का हुआ है,
आज नुकसान वेरी युवाओं का हुआ, सिंपल। एक आज बताइए, नुकसान जब किसान दिया का था, हुआ, जब आज पीडीएस नुकसान ने जवान दिया का था, हुआ है। जब वैक्सीन दिया था तो पूछा था कि तेरा नाम क्या ये है? नुकसान कतई नाम तो नहीं भरपाई पूछा नहीं हो था। सकती। अरे लेकिन साथ में नुकसान की ये बात थोड़ी कर होगा रहे हैं। कि आप जो है 2013 कहीं पे भी गवर्नमेंट मामला पैसे नहीं बनाएंगे, दे रहे कहीं हैं पे भी इलेक्शन पैसा लड़ने मामला में। ले लेंगे, देश के तलवार की जनता जोर को, पे जो देश के मंदिर युवाओं प्राइवेट को, फंड से देश के पता है, और किसान आपको को पता है आज भी गुमराह करने की भारत के कोशिश सारे भारतीय मंदिर जनता गवर्नमेंट पार्टी कंट्रोल के में है। नेताओं के भारत द्वारा के किया सारे गया। मंदिरों में आज जो यही परिणाम पैसे है इकट्ठे कि होते भारतीय हैं जनता वो पार्टी भी के पास गवर्नमेंट को सवाल देते के हैं जवाब हिंदू नहीं है। लोग। आज वो युवा भी सवाल हिंदू करे लोग जवाब नहीं, गवर्नमेंट को किसान देते हैं सवाल पैसे। करे आपको जवाब पता नहीं है है, कितने करोड़ जवान सवाल तिरुपति में करे आते हैं, जवाब नहीं, वो भी व्यापारी हम सवाल करे गवर्नमेंट को जवाब उठा नहीं के है, देते हैं। महिलाएं और जो सवाल राम करे मंदिर मुन्ना बनाया जवाब वो नहीं है। अपने तो पर्सनल कहीं फंड से It's a- भारतीय इन्होंने जनता it's a- पार्टी करके बनाया है। मंदिर और मस्जिद के एक चलना मिनट, चाहती है। आज भी जो मुन्ना मस्जिद खान, में लाउड। पैसे आते हैं वो मस्जिद मामला ये लगता है, कोर्ट पर है। मंदिर नहीं आप लगता है, इंतजार गवर्नमेंट को करें, दे धैर्य देता है। रखें, आपको पता है कोर्ट का आज जो भी भी भारत फैसला में आएगा मंदिर सभी को गवर्नमेंट मान्य कंट्रोल होगा, में है। चाहे बाकी हिंदू जो हो, वैक्सीन मुस्लिम वगैरह हो, की सिख बात हो, कर ईसा रही हो, थी कि रोड ईसाई हो, पूरी कोई बंद भी करना धर्म हो, चाहिए, तो दे दो कोई ना, भी मस्जिद धर्म के ये पैसे ठीक देश से बात बाहर नहीं, ये भी देश ठीक के बात खिलाफ नहीं। let the court अगर decide किसी का हम तो नुकसान देते हुआ, let the court मैं decide but the समझता हूँ court सुप्रीम let the कोर्ट में court ये decide मामला but court है, will उनके go with संज्ञान ASI में। evidence. Yeah. The court will be driven with the evidence of the Archaeological Survey of India. Ladies and gentlemen, this is a big story, big controversy. We got Vishnu Shankar Jain on this channel first. Details of the report with me first on the channel. And after a 30-second Securite commercial break, why the Pakistanis are saying that Pakistanis are killing Pakistanis. What do we have to do with it?